नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, good morning. Dear students, I have launched a series titled Let the Whole Bharat Read. Under this series, I will make you familiar with all the important grammatical basics which you must know when you are in your academic classes. These grammatical basics are also important for the students who prepare themselves for different entrance tests and other prestigious competitive exams. In part 1, under this series, I explained how articles are and the should be used correctly. In this part 2, I will make you familiar with 4 very important adjectives: later, latter, latest and last. When you are able to know the difference among these 4 adjectives, you will be able to enrich your language. Let me straight dive into these 4 adjectives to tell you the difference among these 4 and how they will help you improve your communication and speaking skills. Always remember, later and latest indicate time. For example, in the later years of his life, he took to cooking and gardening. In this sentence, adjective later shows time. Have you heard the latest news about our declining economy? Here, adjective latest refers to time. Later is the comparative degree of adjective late, and latest is its superlative degree. Latter and last indicate position. For example, between the two solutions, the latter proved to be easier. In this sentence, the adjective latter shows position. The last chapter of this storybook reveals a surprising twist. The last indicates position. So remember, later and latest refer to time, latter and last refer to position. Between the 2 cakes, I enjoyed the blank space one more. इन चारों एडजेक्टिव्स में से आप कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? Between the 2 cakes, I enjoyed the blank space one more. इन चारों एडजेक्टिव्स में से आप कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? लेटर लेंगे या लेटर लेंगे या लास्ट लेंगे या लेटेस्ट लेंगे? यहाँ हमारा एडजेक्टिव आएगा लेटर. बिटवीन द 2 केक्स आई एंजॉयड द लेटर वन मोर. क्योंकि यहाँ जो लेटर है शोज पोजीशन, सो द करेक्ट आंसर इज ए, लेटर. As the day rolled on, the blank space hours grew darker and darker. These are the 4 adjectives here: later, latter, last, latest. तो यहाँ कौन सा एडजेक्टिव आएगा? यहाँ आएगा later, A. As the day rolled on, the later hours grew darker and darker. Later indicates time here. He spoke with the blank space, breath of his strength before collapsing. अब ये 4 एडजेक्टिव्स हैं: लास्ट, लेटेस्ट, लेटर, लेटर. अब आप इसमें से कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो लेटर है और लेटेस्ट है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं एडजेक्टिव लेट की. यहाँ हमें
लास्ट लेना चाहिए क्योंकि लास्ट इंडिकेट्स पोजीशन. ही स्पोक विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज स्ट्रेंथ बिफोर कोलैप्सिंग. सो हम किस पर टिक मार्क करेंगे? ए पर टिक मार्क करेंगे. शी फेल्ट सैड not studying earlier when faced with the challenges of the blank space exams. यहाँ आप कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? यहाँ एडजेक्टिव डी लेटर आएगा. She felt sad not studying earlier when faced with the challenges of the later exams. Later indicates time here. The former model of this smartphone lacked key features, but the blank space one addressed all these issues. यहाँ आप कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? यहाँ एडजेक्टिव आना चाहिए later. The former model of this smartphone lacked key features, but the latter one addressed all these issues. Here latter indicates position. The blank space warning I gave you yesterday should have brought a positive change in your behavior. अब देखिए इसमें कौन सा एडजेक्टिव आएगा? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ हमारा एडजेक्टिव लास्ट आना चाहिए बी. The last warning I gave you yesterday should have brought a positive change in your behavior. Our team is excited to reveal the blank space design concept for the upcoming project. अब यहाँ कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? यहाँ हमारा लेटेस्ट आना चाहिए. लेटेस्ट refers to time. So according to the meaning of the sentence, we should take adjective be latest. Our team is excited to reveal the latest design concept for the upcoming project. She studied both the subjects, but she excelled in the blank space. यहाँ कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? यहाँ हमारा एडजेक्टिव सी आना चाहिए later. She studied both the subjects, but she excelled in the latter. Indicates position. In his blank space days, the once exuberant artist went into loneliness, revealing his creative side. अब यहाँ इन चारों एडजेक्टिव्स में से आप कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, लेटर. यहाँ हम डी एडजेक्टिव लेटर लेंगे. इन हिज लेटर डेज द वंस exuberant artist went into loneliness, revealing his creative side. Letter shows position here. The blank space fashion collection from the designer received rave reviews from critics. यहाँ आप कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? यहाँ हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए लेटेस्ट. The latest fashion collection from the designer received rave reviews from critics. Latest क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? टाइम. They decided to meet at a blank space date to finalize the details of their business proposal. अब यहाँ कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? यहाँ हमारा एडजेक्टिव बी लेटर आना चाहिए because later will show time. They decided to meet at a later date to finalize the details of their business proposal. The minister came to the function, blank space, than the audience expected. अब आप
कौन सा एडजेक्टिव लेंगे इसमें? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मीनिंग भी सिंपल है. द मिनिस्टर केम टू द फंक्शन, ब्लैंक स्पेस, देन द ऑडियंस एक्सपेक्टेड. यहाँ आप लेटर लेंगे. द मिनिस्टर केम टू द फंक्शन लेटर देन द ऑडियंस एक्सपेक्टेड. लेटर क्या? कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, लेट की, इसलिए हमारे यहाँ पर जो कंजंक्शन है देन हमने यूज़ किया है. राइट? तो यहाँ करेक्ट आंसर है लेटर. साइंटिस्ट्स आर ईगरली अवेटिंग द ब्लैंक स्पेस फाइंडिंग्स फ्रॉम द रिसर्च एक्सपीडिशन टू द मार्स. अब इन चारों एडजेक्टिव्स में से आप कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? लेटर या लेटर या लास्ट या लेटेस्ट? यहाँ हमारा एडजेक्टिव डी लेटेस्ट आएगा. साइंटिस्ट्स आर ईगरली अवेटिंग द लेटेस्ट फाइंडिंग्स फ्रॉम द रिसर्च एक्सपीडिशन टू द मार्स. लेटेस्ट shows time here. Blank space. Tonight we will gather around the bonfire for stories and roasting foods. कौन सा एडजेक्टिव लेंगे आप यहाँ पर? यहाँ हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए लेटर डी. लेटर tonight we will gather around the bonfire for stories and roasting foods. Later indicates time here. Blank space. Generations will look back on this period as a significant moment in technology. अब इन चार एडजेक्टिव्स में से आप कौन सा लेंगे? लेटेस्ट या लास्ट या लेटर या लेटर? यहाँ हमारा एडजेक्टिव डी आएगा लेटर. Later generations will look back on this period as a significant moment in technology. Later shows time here. The leader enjoyed a good reputation in the blank space part of his life. The initial period was just so though. वही चार एडजेक्टिव्स हैं. आप यहाँ लास्ट लेंगे या लेटेस्ट लेंगे या लेटर या लेटर? यहाँ हमारा एडजेक्टिव सी लेटर आना चाहिए. द लीडर एंजॉयड अ गुड रेपुटेशन इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ. द इनिशियल पीरियड वॉज जस्ट so दो. लेटर shows position here. The first part of the movie was slow, but the blank space part of it was a thrilling one. यहाँ आप लास्ट लेंगे या लेटर या लेटर या लेटेस्ट? यहाँ हम एडजेक्टिव लेटर लेंगे. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज स्लो बट द लेटर पार्ट ऑफ इट वॉज अ थ्रिलिंग वन. हियर लेटर शोज पोजिशन. सो आंसर बी इज करेक्ट. वी नीड टू स्टे अपडेटेड ऑन द blank space trends in digital marketing to remain competitive. अब वही चार एडजेक्टिव्स हैं, लेटर, लेटर, लास्ट, लेटेस्ट. इन चार में से कौन सा आएगा? यहाँ हम डी एडजेक्टिव लेटेस्ट लेंगे. वी नीड टू स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग टू रिमेन competitive. Latest shows time. The blank space time. I saw her. She was wearing a stunning black dress. अब लास्ट, लेटेस्ट, लेटर या लेटर, इन चारों में से आप कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? यहाँ हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए ए लास्ट. The last time I saw her, she was wearing a stunning black dress. Last shows position here. Our company is proud to introduce the blank space addition to our product lineup. वही चार एडजेक्टिव्स हैं, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट, लेटर. आप इसमें से कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? इसमें एडजेक्टिव ए आना चाहिए लेटेस्ट.
our company is proud to introduce the latest addition to our product lineup. Latest shows time here, and this is the superlative degree of adjective late. Dear students, you are also advised to visit the app Shishya on the Play Store, the link of which you will find in the description of this video. You will get all the relevant details about various courses to be offered from time to time. You can also attempt a free test series, the link of which you will again find in the description of this video. Thank you for watching.